Hello friends, welcome to Stock Market Pulse. I'm Neetika. Let's check the pulse of stock market. So again I'm here with the Nifty level for coming week. And yes, one more important thing, I can take some more index also to discuss if I feel it is important to discuss the level. So to know the Nifty 50 Niftybank level for coming week, stay connected till then and smash the like button and subscribe the channel also for regular update. So let's start with the Nifty 50 first. And yes, I have brought one more index today. I felt to discuss it, so I have picked that sector also. I will disclose in the end of the video. So one more index I am discussing today. First, let's discuss the Nifty 50 and Nifty bank level. So let's start with the Nifty 50 के chart पे if we see, we can see this a resistance trend line. Yes, this is a trend line where Nifty 50 is always taking a resistance number 1, 2, 3, then 4, and this is 5 again last time even on Thursday, and then it came here. So Nifty 50 actually showing a downtrend. And actually it is on very important support. And one more thing I want to discuss, I will give my last video link on I button. You can check the exact level of 19,200 for last week, and Nifty 50 respected that level and 19,220 के आसपास उसने लो बनाया and taken a support on Friday in last week. I will give the link in I button. You can check the level. तो 19,200 का सपोर्ट मैंने लास्ट वीक के लेवल में दिया था, which I have given, and it has taken the exact support there. Now, what can happen in next week as Nifty 50 showing little bit negativity? Yes, so I can see it has taken a support which is still a 50 EMA support of 19,250 के अराउंड. 19,250 से 200 के अराउंड एक अच्छा वेरी गुड सपोर्ट ऑफ निफ्टी 50 है. तो ये इसने अभी तक तो इसको संभाला हुआ है. बट इफ इट्स ब्रेकिंग 19,200 देन व्हाट विल हैपन, जो कि इफ मे पॉसिबल इट मे हैपन इन कमिंग वीक, मे बी नेक्स्ट और नेक्स्ट टू नेक्स्ट. अगर 19,200 किसी भी तरह से ब्रेक करता है तो इट कैन टेक अ सपोर्ट है. 19,000 के आसपास भी एक सपोर्ट है, बट यहाँ से लेके यहाँ तक बहुत ही अच्छा एक स्टीप फॉल दिख सकता है फ्रॉम 19,200 after breaking down 19,200 to 18,900. yes, I'm not taking 19,000 क्योंकि 19,000 नहीं, यहाँ पे ही एक अच्छा गुड सपोर्ट दिख रहा है. दैट इज़ वेरी वेरी गुड सपोर्ट फॉर निफ्टी 50. ऊपर के लेवल पे वी सी ये एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन जो मैंने आपको बना के दिखाई है. आई हैव शोन इट हियर ऑन लास्ट थर्सडे. एक्चुअली गैप अप ओपनिंग हुई, it went up, it has taken a resistance here. It is actually 19,600 के आसपास में 580 समथिंग 580 के आसपास इसने यहाँ पे टच किया and just touched and came down here, and it has closed here. Gap up opening के साथ here touched 580 and then again came down and closed here 19,350 around. So this candle was very very actually negative on that day. And Friday तो ये उस फिर यहाँ पे तो गैप अप ओपनिंग हुई and then Friday it opened gap down. तो गैप डाउन खुलते ही वहीं पे ही ये उसी दिन कंसोलिडेट करता रहा and it has taken a support of 19,220 around. So रेजिस्टेंस अगर देखें तो जब तक ये 580 से 600, yes 580 to 600 का रेजिस्टेंस, if it will not break, it cannot go further up.
So it has a very strong resistance of 19,580 to 600. I will take it round figure 19,600. This week, Nifty 50 can trade from 18,900 support to 19,600 resistance. Now let's discuss little bit Nifty Bank chart. What is happening here? Nifty Bank, as I already discussed in last video, that it has making a H and S uh, pattern, H&S pattern, and it even breakdown also happened. But here somewhere 43,700, it has taken a good support, which is actually good support. Here is very strong support. So I'm not going beyond this support. Still I'm taking this support. Even in my last video I have given this support. So this is a very strong support for Nifty Bank. एंड ऊपर के लेवल पे जाए तो इसने भी उस दिन एक छोटी सी गैप अप ओपनिंग के दे के वहाँ पे यहाँ पे रेजिस्टेंस किया था, विच इज़ 45,000 से थोड़ा कम ही था, मीन्स 44,950 और 60 अराउंड. तो एक राउंड फिगर 45,000 का एक रेजिस्टेंस आई कैन टेक इट. और नीचे के लेवल पे वही सपोर्ट है, द सेम सपोर्ट. आई विल गिव द लिंक ऑफ लास्ट वीडियो इन आई बटन. द सेम सपोर्ट आई एम टेकिंग, which Nifty Bank actually has respected, which is 43,700. So Nifty Bank looking actually it is also looking weak. और यहाँ पे भी इसने एक वो बनाया. पहले तो इसका यही एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, विच इज 44,500 टू 600. उसके बाद ही ये कहीं ऊपर जाएगा 45,000 के आसपास. निफ्टी बैंक may trade from 43,700 support to 45,000 resistance around for coming week. As I discussed in starting that I will take some important index. If I feel it is important to discuss the level, I will take some other index also. And today I have picked the Nifty Auto. I wanted to show the levels where it can actually trade for coming week. What should you take decision about your auto stock after डिस्कसिंग दिस निफ्टी ऑटो लेवल. सो निफ्टी ऑटो में भी देखिए तो क्या चल रहा है. निफ्टी ऑटो इज एक्चुअली ट्रेडिंग एट 15,360 के आसपास है. बस बट इसने 20 EMA को ब्रेक कर दिया है. और बट स्टिल इट इज़ इन अप ट्रेंड. 20 EMA को ही ब्रेक किया है, तो अप ट्रेंड में अभी ये है. बट अभी इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 50,190 दिख रहा है. बट 200 मान के चलते हैं तो 15,200 के आसपास अभी इसका एक गुड, इट हैज़ अ गुड सपोर्ट वेयर निफ्टी ऑटो कैन टेक अ सपोर्ट एंड फ्रॉम हियर इट कैन टेक रिवर्सल. तो अभी निफ्टी ऑटो में निगेटिव साइन नहीं दिख रहा है. बट हाँ, 50 EMA and this support, it is very important to keep in your mind for coming week. 15,200 for your auto stocks. Nifty auto level for coming week can be 15,200 to 15,600. At the end, summary of the video is Nifty 50 level 18,900 to 19,600. Nifty Bank level 43,700 to 45,000. and Nifty Auto level 15,200 to 15,600. Stay connected to the channel for regular update of Nifty. Signing off.